concept, and I have a really hard time convincing women because मर्द तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछते कि now the prevalent feeling is that when it is mutually consensual and you really deeply care for each other and you have sincerity for each other, you're going to help each other out. आप एक दूसरे के काम भी आएंगे, ये है वो है, you know, he can be my rock, whatever. And you also kind of are aware that God is a witness, you know, to your relationship and you're mutually exclusive. तो why do a nikah? कि ये चंद बोल अगर हम ना बोलें, और ये मैं आपको उनकी पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, फिर मैं आपको अपना जवाब भी बताऊंगी, कि वो हम ना बोलें, बाकी हम सब कुछ वो कर लें, आखिर we are not harming anybody and we're just trying to get to know each other. ये बहुत प्रेवलेंट है इस वक्त, और इसकी अगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखो ये जना है और गुनाह कबीरा है, that's not convincing enough for them. Are you talking about two single people or two divorced people doing it? No, I'm talking about, of course, a woman who has been through a mishap, so she's divorced. Yeah. And then there's all kinds of, honestly, samples where they're even doing it with a single guy. Let's just bifurcate this. There are two people. I mean, let's just take the extramarital affairs separately, because in this case, let's just isolate this as a case. Yeah, I know. So there's a divorced woman or even a single woman, and they're just committing adultery in the name of consensual, we're not harming anybody. That's what you're saying, right? Fornication, not, adultery, but adultery is when you're married, when you are married. So you're that. Yeah, I know what you mean. Sorry. Yeah. So what you're saying is, okay, what's the question? Where is the harm in that, or why is it wrong? Why is it? Yeah. What would you give to them as a psychologist, let's say, as a Muslim scholar, because this is, in the younger generation especially, ये notion बहुत आम हो गई है कि जो इस्लाम बात कर रहा है वो दकियानूसी बात है. कुछ लोग ये कहते हैं कि जी because it was supposed to protect the woman, that's why a man was supposed to do the nikah. But if a woman is already divorced, let's say she has a business, she's successful, वो अपनी उसमें independent है, वो कहती है मुझे मर्द की protection की जरूरत ही नहीं है. So if I'm having this consensual relationship with a guy, what is wrong with it? I think in the eyes of Allah, I'm okay. Okay. I don't get how human beings, well, I get it now because I understand. Rationalize how human beings rationalize. No, it's not rationalized. How do we generate the guts to think and speak on behalf of Allah Azza wa Jal? That's the only crime they're committing. बाकी के सारा तो आउटपुट्स हैं कि हाँ अल्लाह ने तो इस वजह से ज़ना हराम किया था, अल्लाह ने तो इस वजह से ये गुनाह हराम किया था, अल्लाह ने बताया है कि इस वजह से हराम किया था. अल्लाह ने इन द आईज ऑफ अल्लाह तो मैं गुनाह नहीं कर, इन द आईज ऑफ अल्लाह कैसे, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह नहीं आपको समझ आ रहे, इन द आईज ऑफ अल्लाह आपको नजर आ रही है, इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ने लिखी है वो किताब. वो जब अल्लाह का लफ्ज बोलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने लिख के बता दिया है, और किस तरह बताएं अल्लाह ताला. तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से कहा था कि दिस इज शिर्क के बाद जना को रखा गया है, इस लेवल के ऊपर ये मसला है, और इसकी साइंस भी अब हमें पता है. Now I'm going to talk to all the women for just 1 minute, and I'm going to tell you that even if you are thinking, you know what, you're going to look for sincerity, and if this guy was sincere, that's the last thing he would have done to you. Yes, agreed. Last thing, he would never ever do this to you. The only thing that if you want to test a man's sincerity, this is one of the riskiest but the most authentic indicator कि वो बंदा आप पे इस डिपार्टमेंट में रीच करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं. If he's doing it, absolute black and white, as clear as daylight true हो गया कि sincerity is out of the table. It has left the room. He is not doing nikah and actually committing the act. नहीं, आप कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, और अल्लाह का नाम लेना फिर बंद कर देना. पहले तो यहाँ पे तो ये एरर है कि आप अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं भाई. अल्लाह की नजर में अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने एक ही किताब लिखी है, अल्लाह ने उसमें बता दिया. मैं आपसे इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जाहिर है जो मुझे कांटेक्ट करती हैं, they are
पाकिस्तानीज और एक्सपैट्स, उनके डीएनए में अभी भी वो गिल्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, वो नहीं, गिल्ट जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट ने तो इसलिए साइकोलॉजी अल्लाह में के साथ भी कोई ना कोई इक्वेशन अपनी दुरुस्त करना चाह रही होती हैं। yeah और देखिए because you क्योंकि know what, they're not evil people, huh? So they want to actually no, justify. exactly. And they're Yeah, lonely and they're hurt and they're trying to figure out a way how to make things work. और मेरे लिए उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है एडवाइस करना, बिकॉज मैं कह तो यही, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल ramifications of being in a relationship which is not under the protection of nikah, but I also understand कि ये वहां बैठी हुई है और अकेली है, लोनली है, you know। और अब मैं आपको अपना तरीका बताऊं, मैंने एक दो लोगों के साथ जो the advice I gave them, क्योंकि इनवेरिएबली वो गिल्ट की वजह से ना अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो गई होती हैं। कोई देयर इज नो, दे फील टू गिल्टी कि अल्लाह मेरे तरफ देखेगा भी क्यों। द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज कि एक दिल से जाके उसके सामने सजदा करके रो के तौबा करे, एंड do not move from the janamaz until you feel that connection with Allah Ta'ala, and then Allah Ta'ala will guide you to the right decision. And here are my 2 cents, and then I give them my 2 cents कि बंदा sincere नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मर्द जब तक commit नहीं करता, जो मर्द सच्चा है मोहब्बत में वो आपको अपनाएगा, बाकी सब लफाजी है, everything else is just beautiful word। मैं ना ये अपनाने वाले लफ्ज को ना ये इंडिया से आया हुआ है। अच्छा चले, अपनाना नहीं, निकाह करेगा आपको। नहीं, निकाह भी नहीं, निकाह तो चलें, वो तो एक प्रोसेस है ना। वो लफ्ज जो है ना वो पकड़ लेना, हम लड़कियों को दे दें, बच्चियों को दे दें। वो लफ्ज अल्लाह ताला ने मैन साइकोलॉजी के अंदर खुद इंस्टॉल किया हुआ है। वो है इंडिकेटर ऑफ सिंसियरिटी, याद रखिएगा। वो अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफत है जो कि आदमी को दी हुई है, ठीक है। दैट्स इनसाइड द साइको। साइंस भी देख रही है, वो साइंस भी इसी तरीके से मेजर करती है। मैन साइकोलॉजी के अंदर वो अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो वो आदमी नहीं है। और प्रोटेक्टर ये नहीं होता कि वो आपको सोशल और फाइनेंशियल, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर ग्रेस बिफोर ही प्रोटेक्ट्स योर बॉडी। He protects your grace. और अगर आपने चेक करना हो तो उसे कह देना, यार आप okay, you know what, let's just see whether you are the way you are with me with your daughter or your wife or your mother. No, he is going to be totally protective there. वहां पे अल्लाह की सिफत पूरी कर रहा है, मगर अपनी इस रिलेशनशिप में आके लड़की की ग्रेस इस खैर है यार, you know what, she loves me, I love her. That's not how it works, buddy. You are actually compromising on that sense which is innate. It is black and white, a black and white truth कि अगर तू प्रोटेक्टर है तो तू फिर इस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, दिस इज व्हाट और इस्लाम ने इसको हार्नेस करके इसको लाउड स्पीकर दिया है कि आदमी को प्रोटेक्टर के तौर पे दुनिया में उसको जिम्मेदारियां दी हुई है। ये कव्वाम का लफ्ज है कि तुम दुनिया में प्रोटेक्टर हो। यू आर अपनी किसी जानने वाली खातून या जिसके साथ भी अपने कंसेक्चुअल रिलेशनशिप को छोड़े, इलाके के जितनी भी खवातीन हैं उसको भी तू प्रोटेक्ट करेगा। You are the policeman, you are the DPO of that area. बाकी की बच्चियां भी तेरी वजह से महफूज हो रही हैं, और तू एक लड़की को किसी भी वजह से प्रेडेटर बना हुआ उसका, in the guise of love, in the guise of sincerity. Sorry, that's the last thing that you have. If you were sincere with her, you would have been right off the bat. सबसे पहले उसको कन्विंस करता, if you were in so much love, to convince her कि यार तेरी लोनलीनेस का इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुझे इमोशनल क्लोजर मिला जाए। फिजिकल क्लोजर से इमोशनल लोनलीनेस नहीं खत्म होती। ये तो 18 साल की कार्डेशियंस को समझ आ गई थी, इनको पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं समझ आ रही कि you think sex is going to solve your problem of loneliness? Absolutely not. बेवकूफ बना रहे हो ना, बेसिकली मैं यही कहती हूँ, he is using you, he is basically using you. He knows exactly what he is doing. नहीं, मैं उधर भी चला जाता हूँ कई दफा ना, लड़कों को they are dumb enough to be that kind of predators, which they are convincing themselves that, oh, you know what, I am too sincere with her. Who the hell are you, Sahil Adeem, to tell me if I'm sincere with her? I am just talking to you कि आप अल्लाह अल्लाह ना करें। फिर आपने कोई नई डेफिनेशन निकाल ली है सिंसियरिटी की, तो किसी और किताब से लिखे हैं। अल्लाह की किताब में डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। If you want to protect a woman, go marry her. अपनी बहन के साथ तो तू वाले काम नहीं अलाउ करेगा कि जो इस लड़की के साथ अलाउ करवा रहा है। And that's what I tell